Drawing room. Fresco is an Italian word affreschi, mural, line, wall, plaster painting. So we have two type of the fresco painting. One is called secco fresco painting. Secco fresco painting हमेशा ड्राई लाइन प्लास्टर बनाई जाती है, पर यहाँ पे कौन सी है ब्यूना फ्रेस्को पेंटिंग. ब्यूना जो गीले प्लास्टर, गीले लाइन प्लास्टर बनाई जाती है, Liquid plaster. पाउडर वेजिटेबल कलर का यूज किया है. Vegetable colors used here. ये पर्सन स्टाइल. This is a drawing room. आप देखो आलू दिखाई किस तरह से सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. You can see. सबको महिलाएं घरों के ऊपर खड़ी हुई खूब सारी उनका स्वागत सत्कार करके दिखाई दी. आप बॉस के स्टेप्स को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कोई आवश्यकता So this is the drawing room, as you can see. So beautiful. Of the Raja Mahal. रानी को एक रूम दिया गया था. जो सेंटर में रूम है वो राजा का बेडरूम, 3 रूम लेफ्ट में, 3 राइट में. सामने देखिए वो बाथरूम और टॉयलेट बने उसी यानी 500 वर्ष पहले लोग बाथरूम टॉयलेट से परिचित थे. और ऊपर प्रेयर रूम था जहाँ से डायरेक्टली घर पर दिखाई देता था. इसलिए राजा के द्वारा 7 कमरे, 1 2 3 रानियों के 3 rooms. इस तरफ 3, 1 2 1. And these are rooms for his queens, princess. So he's taking us to one of the rooms there. Arches. फ्रेस्को पेंटिंग है. तो वेदों के अनुसार हमारे समय को 4 एरा में डिवाइड किया गया. Divided into 4 17 areas. लाख 28,000 वर्ष पहले तक Fresco painting. 12 लाख 7,000 वर्ष पश्चात आया त्रेता. इसमें 7 अवतार हुए, विष्णु जी के, राम जी आए. और फिर 8 लाख 64,000 वर्ष का जो एरा कहलाता द्वापर एरा. इस एरा में कृष्ण जी हुए. अभी करंट एरा कहलाता कलयुग. ये 4,32,000 का है. तो अभी 5,160 हुई. तो अभी कल्कि जी का जन्म होगा. माता का समुद्र आएंगे, इनका नाम रखा जाएगा हरिगुप्त. जब कली नाम के फ्रेस्को मारेंगे तो फेमस हो जाएंगे कल्कि. They are depictions of some stories. फिश मत्स्य अवतार, फर्स्ट फिश. सेकंड देखिए कुर्मा, कछुआ अवतार. That is okay. थर्ड टर्टल आ गया. फिर Turtle. वाइल्ड बोर, पिग. Wild boar. फिर Okay. आप फोर्थ देखिए नरसिंह, हाफ लाइन हाफ ह्यूमन. Half human. लुक एट अदर साइड ऑन द लेफ्ट साइड. Yeah. ब्लू में दिख रही है अंडर द अम्ब्रेला बामन अवतार, शॉर्टमैन, ड्वार्फ. Dwarf. फिर आप देखिए छठ में परशुराम जी विद वन मेटल एक्स. और Okay. फाइटिंग विद सहस्त्रबाहु कर्तवीर अर्जुन. ग्वालियर में देखा ना सहस्त्रबाहु टेम्पल, एक्चुअली सहस्त्रबाहु टेम्पल था. Sasvahu temple. ये साथ में राम जी, सीता जी, तीनों भाई हनुमान जी, जामुना. ये राम दरबार को दिखाया गया. और 8वीं इंग्लिश 8 में 4 एंड 4 को 7 को धर्म को दर्शाता है. समुद्र मंथन. बस साइंस की दृष्टि से ये विष्णु के 10 अवतार क्या दिखा रहे हैं? एवोल्यूशन. Evolution. फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1813 में डार्विन थ्योरी दी गई थी. उससे पहले प्रमाण मिलते जो पेंटिंग यहाँ ऑलरेडी है. Water to earth. Human तो development. फर्स्ट सेल डेवलप इन वाटर कोई सेपरेट सेल. फर्स्ट एनिमल कम टू वायरस, देन मोनोसेल एनिमल अमीबा पैरामीशियम, आफ्टर मैनी सेल एनिमल. फिर से बोला है कि प्रोटोप्लाज्म एरा. प्रोटोप्लाज्म एरा, देन एम्फीबियन का रेप्टाइल. कछुआ के एम्फीबियन एरा, रेप्टाइल देन मैमल. ये लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल एविडेंस है. हमारे फोरफादर मंकी. देन इनकम्प्लीट मैन आफ्टर पाषाण एरा, स्टोन एरा. देन परशुराम represent metal era. We have a relationship and more respect to each other and ruling represented by Lord Rama. And we have farming era represented by Krishna. Farming by Krishna. This is the princess room. So what is important is that this place has a lot of fresco paintings, and this art depicts a story, and these rooms are tastefully made with these constructed, and of course we have another set of fresco paintings. फिर मत्स्य अवतार, कुर्मा, बरा, नरसिंह. ये गोवर्धन पर्वत को लिख के दिखाया गया. ये कॉर्नर में समुद्र मंथन को दिखाया गया. So each princess had a room
with a lot ये of देखिए fresco कल की अवतार paintings. इसको दिखाएंगे यहाँ पर देखिए 10th incarnation. So these fresco paintings you'll find in all the princes' rooms. Beautiful. So a lot of ventilation. You can really feel the cool air out here. So look at that. Again, all fresco paintings. Beautiful. So many years ago. Nari Gunjan painting. Okay. 12 महीना. Okay, there are 12 women in that. Because in a year 12 months. Each lady represent 1 month. And 4 lady play musical instrument represent 4 seasons. Okay. That's why they used to 12 women and 4 lady play musical instrument. 1, 2, 3, 4, 5 नीचे 12 है सारे 12. In the form of elephant. I think this is one of the most beautiful palaces with so much of fresco painting and there's so much of fresh air coming in. रूम में पानी के 3 टैंक है. बीच वाले टैंक में आयरन की कढ़ाई जुड़ी है. तो यहाँ आगे जलाएंगे तो पानी गर्म होगा. पॉट को गर्म किया जाएगा. So this is like their bathing room. ये नहाने का कमरा है और वो वाले बाथरूम. So this is for boiling water and all of that. This is the washroom. So this is the toilet. The toilet room. This is the massage room. The massage room. This is the meeting room. Look at that. Again, fresco painting. This is the meeting room. It's a huge, big place. Raja Mahal is full of fresco paintings. It's really good. So this is the dining room. Again, you have these frescoes out here. Look at that. It's truly amazing and it's wonderful. Look at that. One of its kind. Porcha means hidden. This place is actually hidden. Nobody really knows much about it. But one must come and visit these palaces. It's so enticing, so beautiful. And of course, it certainly needs repair. Look at this, which is sad. I mean, it's falling apart. Painstakingly, the artists have painted these scenes from many a texts which were there, each one telling a story. Look at that. So wonderful. Look at her. And then you use your imagination. If you don't know the story, no problems. You can make your own. You can use your imagination. And you tell a story. But you must come here and have a look at these frescoes at the palace. From the inside, look at that. The way symmetrical designs, geometrical designs, very neat even today, but it needs a lot of care. So I'm standing in the courtyard. There's a platform out here. Initially, you can see these iron rings. These were here in the courtyard to tie the elephants of the kings. So again, I'm standing in the courtyard here. This was the main entrance.
They used to constructed the material. They used lime mortar, Yes. the lime and thin brick powder. That powder called surki. Okay. Then they add in water and put in the tank. And they another pot they use. So they add water, jaggery, molasses, fenugreek seed, or flax seed, gum, wood apple, and they used to some pigments as well. For example, like a cell powder. Okay. They mix together and then boiling it. Okay. So long time boiling, then water became sticky. Then they add that water with lime and brick powder. After fermentation, they use for construction work. Inside, they used to material the constructed the wall, granite rock, brick and lime mortar. Okay. So lime have a capacity more than 3,000 years. Oh my God. That's why long time still. So that is why the longevity is there. So the guide explained the way what they used Lime, for long black- time longevity. Black Often. lentil, flax seed, Yeah. fennel seed, Fenugreek seeds. and they used to Look at that. masoor, lentil, Okay. gum, wood apple. Yeah. Gum of the wood apple. So beautiful. molasses. Boil that water, add with lime and brick powder. Yeah. And even outside you have these frescoes. Fresco paintings outside. Another monument that called Look at the ring made.